बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। अभी पीछे हमने बहुत डिटेल से विद एग्जांपल पोर्टर 5 फोर्सेस को डिस्कस किया, ना सिर्फ विद एग्जांपल्स बल्कि इवन इन बहुत ब्रीफली और बहुत डीप डिस्कशन की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजीज। व्हाट आर पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजीज? Porter generic strategies is a group of 4 categories of competitive strategy: differentiation, cost leadership, focus, it's about cost ka focus about differentiation. Michael Porter suggested that business can secure sustainable competitive advantage by adopting one of 3 generic strategies. He also identified a fourth strategy, middle of the road strategy, which, although adopted by some business, is unlikely to create a competitive advantage. बेसिकली जो माइकल पॉर्टर ने जो स्ट्रेटजीज डिफाइन की हैं वो 3 कंसिडर की जाती हैं। कॉस्ट पे लाइक जो चीजें आ रही हैं, कॉस्ट लीडरशिप आती है, डिफरेंशिएशन आती है, फोकस आता है। बट अगेन जो फोर्थ वन है, कुछ बिजनेसमैन उसको यूज कर रहे होते हैं, बट नॉर्मली समटाइम उसको इग्नोर भी किया जाता है। लेकिन how was Porter generic strategies developed? The study of business strategy was strongly influenced by Michael Porter, Howard professor and author. In 1985, he wrote the seminal text Competitive Advantage, creating and sustaining superior performance concerning business strategy. In his text, he proposed 3 or 4 categories of generic strategies for approaching a product market. What is effect of competitive strategy? Per Porter, any one of these strategies is capable of producing a competitive advantage for a business in a given market. It is important to note that every strategy is not possible for a single firm. However, if the firm is capable and execute a strategy sufficiently, then it can be achieve a competitive advantage in the market. जैसे कि पहले मैं बात कर चुकी हूँ, माइकल पॉर्टर इज अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. A firm's success in strategy rests upon its position itself in respect to its environment. बेसिकली इन स्ट्रेटेजी का पर्पस ये है कि इनकी प्रोडक्ट या सर्विस की पोजीशन को क्लियर करना और ये देखना कि उसकी एनवायरमेंटल वर्थ क्या है. माइकल पोर्टर हैज आर्ग्यूड दैट अ फर्म स्ट्रेंथ ultimately fall into one of two headings: cost advantage and differentiation. Of course, आपकी फर्म में अगर कोई स्ट्रेंथ है तो अल्टीमेटली वो दो चीजों में लीड कर सकती है, या तो कॉस्ट एडवांटेज उसका होगा या डिफरेंशिएशन का फैक्टर होगा कि वो कुछ अलग से हटके होगा. बाय अप्लाइंग दिस स्ट्रेंथ इन either a broad or narrow scope, 3 generic strategies result: cost leadership, differentiation, and focus. What are the generic strategies? In summary, the strategies were as follows: cost leadership, differentiation, focus, cost focus, and differentiation focus. ये 5 स्ट्रेटजीज हैं जिन पे हम बात करेंगे और बहुत ब्रीफली बात करेंगे. Porter generic strategy basically have 2 main divisions. One of these is competitive scope. 2 main divisions: competitive scope, and another one is like generic strategies have mainly 2 main divisions: competitive scope, competitive advantage. In further, they have subdivision as well. Each has 2 subcategories. पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजीज बेसिकली आपको बताता है कि इतने टफ सिनेरियो में, इतने टफ कंपटीशन में भी आप ना सिर्फ compete कर सकते हैं बल्कि आप लीड भी कर सकते हैं. बस इसके लिए इस स्ट्रेटजीज को समझना थोड़ा सा लाजमी है. इस मॉडल के बेसिकली वाइस वर्सा 2 स्कोप है. वन इज कंपेटिटिव स्कोप एंड अनदर वन कंपेटिटिव एडवांटेज. कंपेटिटिव एडवांटेज से हमें यह पता चलता है कि ना सिर्फ हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं, बल्कि हम लीड भी कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ हम बात करेंगे, इसके 2 स्कोप हैं, एक कंपेटिटिव स्कोप एंड कंपेटिटिव एडवांटेज.
कंपेटिटिव स्कोप में हम मार्केट को देखते हैं। ऑन द अदर साइड जब कंपेटिटिव एडवांटेज की बात की जाए तो आपके पास इंडस्ट्री के पास ऐसी कोई स्पेशलिटी होती है जो आपके कंपेटिटर के पास नहीं होती है। अभी हम फर्दर इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले वी सी द डिफरेंस बिटवीन फार्म एंड इंडस्ट्री। फार्म एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी का नाम है। ऑन द अदर साइड जो ग्रुप ऑफ फार्म्स है उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। सपोज लाइक अगर एक फर्म है, एक ग्रुप फुटवेयर कंपनी है तो उसको हम फर्म कहेंगे। बट डिफरेंट जो फुटवेयर कंपनीज हैं, जो उन ग्रुप्स को मिला के जो कहा जाएगा वो इंडस्ट्री कहलाएगी। जैसे अगर हम बाटा की बात करें तो बाटा एक फर्म है, एक फुटवेयर की बात हो रही है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम देखें कि हम बाटा सर्विस और जितनी भी शू शॉप है तो अगर उनकी बात की जाए तो वो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो आएगा उसको हम इंडस्ट्री कहेंगे। हम यहाँ पर कंपेटिटिव एडवांटेज की बात करें और अगर आप इसमें लीडर बनना चाहते हैं, जैसे हमने पहले बात की है कि ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि आपके पास इतनी स्पेशलाइजेशन हो, आप मार्केट में दूसरों से डिफरेंट हो और आप कुछ एडिशनल दे रहे हो, तो तभी आप मार्केट लीडर कहलाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आएगा। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब कि लाइक आपकी जो कॉस्ट है आप उसमें लीड कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट आपके कंपेटिटर से कम हो। डिफरेंशिएशन में अगर हम देखें तो ऐसी चीज हो कि आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट हो, कुछ यूनिक हो। ऑन द अदर साइड अगर आप किसी छोटे ग्रुप की बात करें तो आप एक फोकस होकर ग्रुप के साथ चलें, उसमें आप कॉस्ट लीडरशिप लाएं, उसमें आप डिफरेंशिएशन लाएं। यहाँ पर हम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को ज्यादा डीपली डिफाइन करते हैं। एमिंग टू बिकम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। आप एम बना लें कि आपने लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना है, आपकी प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो, जबकि आपके कंपेटिटर की जो प्रोडक्ट है वो हाई कॉस्ट पे, सेम वही प्रोडक्ट हाई कॉस्ट पे अवेलेबल होगी। द फर्म कैन compete ऑन द प्राइस विथ एवरी अदर इंडस्ट्रीज एंड अर्न हाई यूनिट प्रॉफिट। जो फर्म है compete करती है ऑन द प्राइस with the industries and earn high unit profit. Cost reduction provides the focus of the organization strategy. Target a broad market. ये broad market को target किया जाता है. Competitive advantage is achieved by driven down cost. A successful cost leadership strategy requires that the firm is the cost leader. यानी कि वो जो इंडस्ट्री है, वो जो फर्म है वो कॉस्ट लीडर हो एंड इज अनचैलेंजेबल इन दिस पोजीशन, और कोई उसको चैलेंज ही ना कर सके। स्पेशली बेनिफिशियल वेयर कस्टमर आर प्राइस सेंसिटिव, जहां पे कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होता है। यहाँ पर हम कॉस्ट लीडरशिप को फर्दर डिफाइन करते हैं। टू अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप अ बिजनेस विच यूजुअली नीड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम देखें तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ये फैक्ट है कि जी अगर आपकी जितनी ज्यादा प्रिंटिंग होगी, जितने ज्यादा पेजेस होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रिंट ज्यादा होंगे, उतनी कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम आएगी। इट्स लाइक द सेम विथ शू इंडस्ट्री। जितने ज्यादा शू बनेंगे ऑफ कोर्स वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी जो आपको बेनिफिट होगा वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल इजीली आप अचीव कर सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन मीन्स दैट द बिजनेस विल नीड टू अपील टू अ ब्रॉड पार्ट ऑफ द मार्केट। आप मार्केट के बहुत बड़ी जो ब्रॉडर मार्केट है उसको, जो ऑडियंस है उसको टारगेट करती हैं। आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है बट प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। फॉर दिस रीजन आवर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी इज अ ब्रॉड स्कोप स्ट्रेटेजी। अ कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस कैन क्रिएट अ कंपेटिटिव एडवांटेज। और ये कॉस्ट लीडरशिप जो है कंपेटिटिव एडवांटेज का बहुत मेजर पार्ट है। By reducing production cost and therefore increasing the amount of profit made on each sale, as the business believed that its brand can command a premium price. By reducing production cost and passing on the cost saving to the customer in the hope that it will increase sale and market share. बेसिकली आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे ही डिक्रीज होती है, आपका प्रॉफिट जो है, आपकी सेल जो है, मार्केट शेयर वो इंक्रीज हो जाता है। लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स इंक्लूड इजी ग्रुप, रियान एयर एंड वॉलमार्ट। वॉलमार्ट को हम यहाँ डीपली स्टडी करते हैं। कॉस्ट लीडरशिप को एक और आसान टर्म्स में ये भी कहा जा सकता है
कि आप सबसे सस्ता रेट में सेल करें, अपने कंपेटिटर को आगे ना बढ़ने दें और प्राइस में आप लो कॉस्ट हो बट विथ हाई क्वालिटी। यहाँ हम लो कॉस्ट की जो कॉस्ट लीडरशिप की एग्जांपल लेते हैं वॉलमार्ट की। द सेंट्रल गोल ऑफ वॉलमार्ट is to keep retail price low, and the company has been very successful at this. Experts estimate that Walmart saves shoppers at least 15% on a typical cart of groceries. Walmart stores is rolling out its everyday low price retail strategy to more international market to replace the more usual high low pricing in emerging market. EDLP means working with suppliers to ensure their prices are constantly low but also mean price change are kept to a minimum. Walmart also employ a good structure that works with the system to empower the low price strategy. Walmart has in place a set of system that helps to achieve its strategy of low price every day. Success का मंत्र क्या है? Access to the capital requires to make a significant investment in production assets, design skills for efficient manufacturing, high level of experts in manufacturing process engineering, efficient distribution channel. इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व होगा? अदर फर्म मे बी एबल टू लोअर देयर कॉस्ट एज वेल, कि दूसरी फर्म जो है वो भी अपनी कॉस्ट लो कर दी। एज टेक्नोलॉजी improves, the competitors may be able to leapfrog the production capabilities, thus eliminating the competitive advantage. It could lead to a damaging price wars. There might be a difficulty in sustaining cost leadership in the long run. A firm following a focused strategy might be able to achieve even lower cost within their segments. डियर, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस्ट लीडरशिप की, तो अगर इनके सेलिंग प्राइस 100 है और आपका कंपेटिटर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 80 है और उसका प्रॉफिट ऊपर से 20 आता है, आपको ये नहीं करना कि आप उसकी कॉस्ट 80 करने के लिए, आई मीन सेलिंग प्राइस को 80 करने के लिए आप उसको 80 कॉस्ट लगा दें, प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रॉफिट को 0 कर दें। नहीं, बल्कि आपको उसका जो रॉ मटेरियल है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करना है, उसको 60, और ऑन द अदर साइड आपका प्रॉफिट स्टिल 20 ही रहेगा। इट्स मीन कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी कॉस्ट लीडरशिप है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में हम जो बात करते हैं, अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कॉल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस that offer unique attribute that are valued by customer. बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स हो प्रोडक्ट की या सर्विस की वो डिफरेंट और यूनिक हो और कस्टमर उसको वैल्यू करे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब अगर इनकेस किसी को कोई प्रॉब्लम है चलने में, तो बाटा ये प्रिविलेज नहीं देता, बाटा अपने कस्टमर्स को ये यूनिक पॉइंट नहीं देता कि वो उनको एक स्पेशल लाइक फेवर पे उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग शूज को बना के दे। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो बॉबी शू या सर्विस इंडस्ट्री इसमें थोड़ा सा प्रिविलेज लेती है। कस्टमर्स परसीव द प्रोडक्ट टू बी डिफरेंट एंड बेटर देन दैट ऑफ राइवल्स, कि कस्टमर फील करे, प्रिविलेज फील करे कि उसकी जो उसने प्रोडक्ट और सर्विस बाय की है वो उसके कंपेटिटर की प्रोडक्ट से बेहतर है। The value added by the uniqueness of the product may allow the firm to charge a premium price for it. It's very important कि in case अगर आपको आपकी विश लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो यूनिकनेस है, जो यूनिक है, तो उस पे आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन कैन बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट इमेज और ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल्स क्वालिटी, एडिशनल फीचर्स। It requires their research capability and strong market. जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन होती है फीचर्स पे, डिजाइन पे, यूजेज पे, ड्यूरेबिलिटी पे, और एप्पल से बेस्ट एग्जांपल यहाँ नहीं दी जा सकती। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी टू बी डिफरेंट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन strive for. Companies and product ranges that appeal to customer and stand out from the crowd
have a competitive advantage. Porter asserts that business can stand out from their competitors by developing a differentiation strategy. With a differentiation strategy, the business develop product or service features which are different from competitors and appeal to the customer, including functionality, customer support, and product quality. यहाँ पर हम ब्रॉम्पटन फोल्डिंग बाइसिकल की बात करेंगे. When folded are more compact than other folding bikes. Folding bikes are usually purchased by people with limited storage space at home or on the move. कि जिन लोगों के पास अपने घरों में या अपनी जहां वो जॉब करते थे स्पेस की कम थी जगह, तो ऑफ कोर्स उन लोगों ने फोल्डिंग बाइसिकल को प्रेफर किया और ये उनकी डिफरेंशिएशन थी. यहाँ पर हम मैकडॉनल्ड की अगर एग्जांपल लें तो मैकडॉनल्ड कस्टमर्स आर ऑल क्लासेस बट लार्जली वर्किंग एंड मिडिल क्लास एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस. यानी कि ज्यादा उन्होंने फोकस मिडिल क्लास वर्किंग पर्सन और हर एज के लोगों को उन्होंने टारगेट किया. मैकडॉनल्ड स्टॉप टू मीट अ कस्टमर वेट टाइम एट नो मोर देन 1 minute in line and 30 seconds at the counter. अगर आप सबको भी याद होगा कि मैकडॉनल्ड ने हैप्पी मील स्टार्ट किया था. हैप्पी मील की स्ट्रेटेजी क्या थी कि मैकडॉनल्ड ने आइडेंटिफाई किया था कि जो डिसीजन मेकर है वो पेरेंट्स हैं और वो डिसीजन मेकिंग जो करते हैं वो प्राइस के बिहाफ पे करते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उस हैप्पी मील के अंदर एक टॉय, फ्रेंच फ्राइज, कोक, बर्गर और एक उसको नाम दे दिया हैप्पी मील का. तो इससे कस्टमर्स डेफिनेटली बहुत अट्रैक्ट हुआ. बच्चों के लिए जो पेरेंट्स है उन्होंने ये कि जी अच्छा ठीक है अगर हम हैप्पी मील लेते हैं तो फ्राइज और बर्गर तो ऑटोमेटिकली है, कोक भी आ जाती है फ्री में और साथ में एक अदर ट्राई भी आ जाता है. मैकडॉनल्ड ने जो एक और डिफरेंशिएशन की, मैकडॉनल्ड नोज दैट सम कस्टमर गो टू द stores to take a quick break from their day activities and not because McDonald was able to make their food 10 seconds faster than a competitor. So McDonald's marketing executive then put together the phrase, "Have you had your break today?" तो उन्होंने उनको इमोशनली अटैच किया अपनी ब्रांड के साथ. मैकडॉनल्ड का जो सक्सेस मंत्र था, access to leading scientific research, highly skilled and creative product development team, strong sales team with the ability to successfully communicate the perceived strength of the product, corporate reputation for quality and innovation. इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट. हाई कॉस्ट ऑफ कोर्स एक रिस्क है. कस्टमर माइट बिकम प्राइस सेंसिटिव एंड चूज ऑन प्राइस रेदर देन यूनिकनेस. Customer may no longer need the differentiation factor, limitation by competitors, and charge the customer taste. Rivals pursuing a focused strategy may be able to achieve even greater differentiation in their market segment. कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका मार्केट कवरेज ज्यादा होगा, आपका जो प्रॉफिट है ऑफ कोर्स वो ज्यादा होगा. इन केस आप कॉस्ट लीडरशिप यानी कि आप लो कॉस्ट नहीं रख सकते, ऑन द अदर साइड आप डिफरेंशिएशन भी नहीं रख सकते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप में ना तो ये कैपेसिटी है कि आप अपने कंपेटिटर से कुछ डिफरेंट कुछ यूनिक बना सकें और आप पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर कर सकें. अब हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन आती है. थर्ड ऑप्शन क्या है? फोकस. फोकस में भी कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन है. इसमें भी आपको या तो कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस करना होता है या डिफरेंशिएशन. बट डिफरेंस ये है कि इसमें आपने पूरी इंडस्ट्री को नहीं कैप्चर करना होता, आपने जस्ट एक स्मॉल ग्रुप को फोकस करना होता है. अब हम यहाँ पर फोकस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा डीपली डिफाइन करते हैं. द फोकस स्ट्रेटेजी कंसंट्रेट ऑन अ नैरो सेगमेंट. जैसे हमने पहले कहा कि फुल मार्केट को, फुल आपके इंडस्ट्री को नहीं टारगेट करी थी, नैरो सेगमेंट, and within that segment attempt to achieve either a cost advantage or differentiation. The premise is that the need of the group can be better survived by focusing entirely on it. फोकस स्ट्रेटजी में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट और इंजॉयबल फैक्टर आता है, a high degree of customer loyalty, and this in charge loyalty
discourage other firms from competing directly. Because of their narrow market focus, firms pursuing a focused strategy have lower volume and therefore less bargaining power with their suppliers. However, firms pursuing a differentiation focused strategy may be able to pass high cost on the customer since close satisfaction substitute product to don't exist. Under a focus strategy, a business focuses its effort on one particular segment of the market and aims to become well known for providing product service for that segment. They form a competitive advantage by catering to the specific needs and wants of their niche market. Focus strategy is known as narrow scope strategy because the business is focusing on a narrow specific segment of the market. यहाँ पर हम जो एग्जांपल पेप्सी की लेंगे वो फोकस स्ट्रेटजी में लेंगे. By successfully adopting the focus strategy since 1997, PepsiCo has emerged as the second largest consumer packaged good company. The company has significantly strengthened its competitive position in the beverage segment by acquiring leading beverage companies like सक्सेस मंत्र क्या है? Low investment in resources. The firm benefit from specification, provide scope for greater knowledge of a segment of the market. Market entry to new market easier and less costly. Firm using a focused strategy often enjoy a high degree of customer loyalty. क्या इन्वॉल्व होगा इसमें? Limited opportunities for growth. The firm could outgrow the market. Danger of decline in the chosen segment or niche. Risk of imitation. Risks of changes in the target segment. We have learned cost leadership, being the lowest cost producer in the industry as a whole. Differentiation, the exploration of a product or service which is believed to the unique. Focus, confining activities to only part of the market though providing good or services at lower cost to that segment cost lead focus and providing a differentiated product or service so that segment differentiation focus. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, माइकल पोर्टर suggested that business can secure a sustainable competitive advantage by adopting one of three generic strategies: cost leadership, differentiation, and focus. But we can't forget about fourth one. He also identified a fourth strategy, middle of the road strategy, which although adopted by some business is unlikely to create a competitive advantage. Middle of the road, some business will attempt to adopt all three strategies: cost leadership, differentiation, and niche focus. A business adopting all three strategies is known as stuck in the middle. They have no clear business strategy and are attempting to be everything no to everyone. This is likely to increase running cost and cause confusion. As it is difficult to please all sectors of the market, middle of the road business usually do the worst in their industry because they are not concentrating on the business strength. To create a competitive advantage, business should review their strengths and pick the most appropriate strategy: cost leadership, differentiation, or focus. Although each of these strategies are known as generic strategies because they can be applied to every industry, they will not suit every business. For example, small business may find it difficult to generate the economic of scale needed for broad scope cost leadership, but a smaller customer base may enable them to offer a personalized service though a narrow scope focused strategy. A larger business may not be able to generate sufficient revenue through a focused strategy, but be able to pursue aggressive broad scope cost leadership because of the size of the business.
Whatever strategy our business decide to adopt, they should make sure that it isn't middle of the road because one business cannot do everything well. और ये ट्रू फैक्टर है कि जो हर कोई कहता है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो उसको मिडल में नहीं होना चाहिए, उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की तरफ होना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को, अपने इंडस्ट्री को, अपनी फर्म को कामयाब कर सके।